वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत हैं, मेक इन इंडिया पर फोकस करना बेहद जरूरी है, स्किल इंडिया पे, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके चलना लेकिन पड़ेगा। अभी मैं आ रही हूँ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर। हमने कहा कि हम बाहर से निर्यात क्यों करें, हम बाहर निर्यात तो करेंगे लेकिन बाहर से आयात क्यों करें, माफ कीजिएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि हमें मेक इन इंडिया पर जोर देना होगा, तो ऐसे में अगर हम एक सेक्टर की बात करें जो कि स्मार्टफोन सेक्टर है, उसमें बहुत वृद्धि देखी गई। 99% जो मैन्युफैक्चरिंग है अब वो भारत में ही हो रही है। ऐसे में और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कि भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो और जो खर्चा है वो कम हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ योजनाएं अपनाई जा सकती हैं? देखिए, पीएलआई के अंदर बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे आपने हैंडसेट के, टेलीफोन, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की। हम कितने बड़े इंपोर्टर थे और हम एक्सपोर्टर भी हैं और 99% हम अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी कर रहे हैं। ओनली 1% वी आर इम्पोर्टिंग। बिल्कुल। तो इसी प्रकार पीएलआई के अंदर और इंसेंटिव दिया जाए, टैक्स हॉलीडे दिया जाए, वेटेड डिडक्शन दिया जाए, इंपोर्ट मशीनरी के ऊपर हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाए, तो ये और क्रेडिट को हम कम करा जाए, इंटरेस्ट रेट कम करा जाए, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम सपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो आइटम्स हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपोर्ट के रिलायंस कम कर सकते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, ये हमारे सरप्लस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। 2047 तक का जो टारगेट है हमें अचीव करने के लिए 8% जीडीपी करनी चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहीं पर होगी, प्रॉब्लम खत्म होगी और हमारा देश विकसित की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएगा। जी हाँ अरविंद जी, एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था इस सरकार ने, वो था मर्जर्स, आईबीसी भी था, इंसॉल्वेंसी, और मर्जर किया था। आप ही से मैं, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर को बहुत नजदीक से देखते हैं और जानकारी रखते हैं, तब ये कहा गया था कि बैंक जो हैं बेच दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अब उसका जो है सीधे तौर पर लाभ हमारी आर्थिक व्यवस्था को सीधे तौर पर नजर आ रहा है, एक बात। और दूसरा, एनपीए भी अभी सबसे निचले स्तर पर है, ऑल टाइम लो है इस वक्त। तो क्या एक वेट एंड वॉच की स्थिति में थे बैंकिंग सेक्टर की लोन प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए? अब उस पर कुछ बदलाव आएगा क्या? देखिए, हमारे कॉमर्शियल बैंक, पीएसयू बैंक, शेड्यूल बैंक बहुत स्ट्रांग हुए हैं, एनपीए बहुत कम हुए हैं, हमने देखा है। और अभी प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर के अंदर सारे कॉर्पोरेट, प्राइवेट कॉर्पोरेट से भी ज्यादा निकल के आई थी, और इनहेरिएंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है हमारे पीएसयूज के अंदर। तो एनपीए कितनी बड़ी समस्या थी, इसको हमने सुलझा लिया है। तो ये मैं समझ रहा हूँ आने वाला टाइम, यदि हम थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पास्ट में पीएसयू बैंकों को मिला, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट से ने दिया, तो वो यदि थोड़ा सा भी मिलता है तो ये पीएसयू बैंक आर कैपेबल। उनकी जैसे योनो ऐप है, इट इज वर्किंग वेरी वेल, तो दे कैन डू ऑल वो टाइप ऑफ वंडर्स। नहीं, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जो है हमारे व्यवसायी जो है चाहते थे कि उनको लोन मिले, वो एक्सपेंड करें अपने व्यवसाय को, लेकिन एनपीए एक बड़ी मजबूरी बन गया था, समस्या बन गया था बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब वो थोड़ी सी समस्या कम हुई है, अब थोड़ा सा लोन जो है हाथ खोल कर दें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है, निर्माण क्षेत्र में भी थोड़ा सा विस्तार होगा। हाँ जी, ये बैंक अब खुल के कर भी रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ अभी रिसेंट टाइम बढ़ा भी है हमारा, है नहीं। और पीएसयू बैंक में एक स्टेज पे ऐसे आ गया था कि 10% जीएनपी बढ़ गए थे, वो अब 1%, 1.5% के ऊपर आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। और
ये एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है और उनकी लैंडिंग कैपेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर की सुनहरी तस्वीर क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर, हाँ, वो भी रिफ्लेक्ट कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि एनपीए हमारा 1-1.5% रह गया है और जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट कम हो गया था, प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट पीएसयू बैंकों पे कम हो गया था। हमने देखा है कि शेयर के अंदर भी काफी उछाल रहा है 1-1.5 साल के अंदर, ऑल पीएसयू सेक्टर में काफी तेजी आई है। तो ये उस ट्रस्ट फैक्टर को दिखला रहा है जो हर स्टेक होल्डर को इसमें नजर आया है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं संसद भवन और कुछ ही देर में तकरीबन 11 बजे वो एक बार फिर से आम बजट पेश करेंगी। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं संसद टीवी पर। और संसद भवन के भीतर जाती हुई और हम बता दें कि कैबिनेट के पास जाएंगी वित्त मंत्री, कैबिनेट से जो है हरी झंडी मिलेगी, तब ये आम बजट पेश किया जाएगा। ये परंपरा है, ये प्रक्रिया है बजट पेश करने की। और हम लगातार बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण पर और कैसा होगा 2025-26 का बजट। और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी प्रीति सिंह। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को सुप्रभात और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिबिंब। तो पूरे देश की निगाहें आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर। कल जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण हमने देखा तो जाहिर तौर पर उम्मीदें बहुत है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी हैं। तो देखना होगा कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके बीच में आखिर किस तरह का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे सामने रखती है। और जो सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे, कुछ ही पलों का और इंतजार है। संसद भवन परिसर पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे जब सत्र की शुरुआत होगी तो ये बजट हमारे सामने होगा। तो आज हम जो लगातार संसद टीवी पर चर्चा कर रहे हैं उसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस देश के सामने हैं और आखिर आज जो बजट आने वाला है उसमें कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस हो सकता है और आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए हमें क्या कुछ रोड मैप दिख सकता है आज बजट के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संकल्प लिया है देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का। उस संकल्प की सिद्धि में कितना सहयोग दे पाएगा इस बार का आम बजट, ये भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला पूर्ण बजट आज आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। तो क्या रह सकता है बजट का स्वरूप, इस पर हो रही है लगातार चर्चा। सर, जो चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त है, हाँ जी, आर्थिक सर्वेक्षण में जो कुछ हमें दिखाई दिया, क्या बड़े 3 चैलेंजेस और क्या बड़ी 3 अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय दिखाई दे रही हैं और इसको अगर हम देखें तो बजट का स्वरूप आज क्या रहेगा? देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वेज के अंदर मेन बात कही गई थी वो डी रेगुलेशन के ऊपर बात कही गई थी कि हमारे यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हाईली रेगुलेटेड हैं, इसको कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया जाए। और बाकी जो बजट की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ टैक्स रैशनलाइजेशन होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहिए, डेवलपमेंट की घोषणाएं होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी हमारा लास्ट टाइम 11,10,000 करोड़ से बढ़कर इट शुड बी 13 लाख करोड़ के करीब जाना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप को बेनिफिट मिलना चाहिए, जीएसटी रैशनलाइजेशन होना चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर जो हमारा बेस है वो 2.5 लाख से कुछ 5 लाख तक या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बढ़ना चाहिए और जो 30% टैक्स है 15 लाख से ऊपर उसको 20 लाख तक आई थिंक उस लिमिट को बढ़ा देनी चाहिए। शेयर मार्केट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो जो 12.5% लास्ट ईयर किया था उसको इट शुड बी डन बाय 10% और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो उस पर रैशनलाइज करके कम करना चाहिए जो कि आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं संसद भवन के भीतर और डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय निकाला और क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए इस बार के आम बजट में। जी, हम देख भी सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3.3% की दर से बढ़ी है और हम जानते हैं कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया प्रतिबिंब की ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ऐसे में IMF की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, लगातार यही कहा गया है कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का इंजन बना रहेगा। इस तरह के कमेंट्स लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आते रहे हैं, लेकिन जो कुछ चैलेंजेस खड़े हुए हैं वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से खड़े हुए हैं। उन चैलेंजेस से किस तरह से आज बजट के जरिए पार पाने की कोशिश होगी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले सबसे बड़ी बात यह है प्रीति कि अगर बात करें कोरोना काल की भी, तब से लगातार ग्रामीण परिवेश हमारा और कृषि सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार सपोर्ट देता आया है और उस वजह से भी ये सुनहरी तस्वीर हमारी GDP की नजर आ रही है। 6.4% की GDP ग्रोथ का अनुमान है और ये अनुमान जो है वैश्विक परिदृश्य जो चुनौतीपूर्ण है जिसका जिक्र आप लगातार कर रही हैं, उसको देखते हुए काफी अच्छी रफ्तार कही जा सकती है। और दो विशेषज्ञ मेहमान जुड़ गए हैं। सुधीर गुप्ता जी हैं MP BJP, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सुजीत कुमार जी हैं MP BJP राज्यसभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मेरी सहयोगी प्रीति भी इस बात का जिक्र कर रही हैं और लगातार हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य है चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौती को पार करते हुए हम लोग अपनी इस आर्थिक यात्रा को लगातार सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बिंदुओं को कहीं ना कहीं इंगित किया गया है। अब इससे आगे क्या, यानी कि आम बजट 2025-26 में क्या कुछ विशेष रह सकता है या रहना चाहिए? जी देखिए प्रतिबिंब जी, आपने जैसे कहा हमारा GDP ग्रोथ अभी 6.4% का अनुमान है, जो ठीक है, थोड़ा सा पिछले साल के तुलना में कम है, लेकिन आज भी ये जो वर्ल्ड GDP है, वर्ल्ड GDP आज 3.2% जो है इसका डबल है। और अभी जो 2027 में हमारी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक हम लोग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो हमारा जो रोड मैप है, ये बिल्कुल हम लोग उसी ट्रैक में हैं। और बजट से जो अपेक्षा है, पिछले बार कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ के ऊपर था, या नारी शक्ति पे ध्यान था, और जो ट्राइबल करीबन 5 करोड़ अपने जो आदिवासी भाई बहनें हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया था, ये सब पे फोकस तो रहेगा ही। देखिए, जो अब आम चर्चा होती है कि टैक्स रेट कमा दो, घटा दो, इसको मैं बहुत ज्यादा मान्यता देता नहीं हूं, क्योंकि देखिए आज भी देश में सिर्फ 3 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये बात जरूरी है कि अपना टैक्स रेट थोड़ा कम हो जाएगा तो मिडिल क्लास लोगों के पास ज्यादा पैसा हाथ में आ जाएगा खर्च करने के लिए, लेकिन 3 करोड़ लोग ही जब टैक्स भरते हैं तो इसमें 140 करोड़ जनता में ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा बेहतर है कि हम लोग टैक्स नेट को वाइड करेंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएं, कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग टैक्स देना चाहिए। तो इस पे वित्त मंत्री जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कई बार कर चुके हैं, ये बात पे भी मुझको लग रहा है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और MSME का बात हम लोग हमेशा करते हैं, MSME सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि MSME ही जॉब्स क्रिएट करते हैं, MSME वेल्थ क्रिएट करते हैं देश के लिए। और आज के अभी आप देखेंगे, देखिए आज GST 20 लाख के ऊपर जिसके टर्नओवर है कोई भी MSME का, तो उसको GST देना होता है। 20 लाख क्या होता है आज के डेट में? एक आप ऑर्डर मिल जाएगी आपको 20 लाख का, तो कम से कम इसको 2 करोड़ के ऊपर लेने की जरूरत है। जो कंप्लायंस की बात होती है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा है MSME के लिए, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री के हैं उनके लिए कंप्लायंस कम करने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बजट में ये सब चीज पे ध्यान दिया जाएगा। सुधीर गुप्ता जी, आपका अनुमान, आपकी आशाएं, उम्मीदें क्या कह रही हैं? प्रधानमंत्री जी ने जब सत्र शुरू होने से पहले कुछ संक्षिप्त अपना संदेश दिया, माँ लक्ष्मी का जिक्र था, गरीबों का जिक्र था, मिडिल क्लास का जिक्र था, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, मुझे जो लगता है, मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ सांसद के रूप में काम करते करते ये तीसरा दौर है, और हमने जब 2014 में कदम रखा था तब एक आधार बनाया था अंत्योदय,
यानी बेसलाइन ये है कि गरीबों के कल्याण पर ज्यादा फोकस देंगे। और अगर जब गरीबों के कल्याण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान जाता है, देश की अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि बिना बजटीय व्यवस्थाओं की यह संभव नहीं। और जब हमने फर्स्ट टाइम देखा कि कुल 13,90,000 करोड़ रेवेन्यू था, कंट्री डेफिसिट में थी, डेफिसिट में तो आज भी होगी, मगर मुझे लगता है कि ये जो बजट आज आएगा ये 50 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपेंसेस बजट होगा। और जो फोकस एरिया है, हमने इन 10 सालों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा को छोड़कर उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है। और बेसलाइन पर जो काम हुआ है उसको लोगों के बनते हुए घर देखे। अभी हमने देखा 3 करोड़ नए मकान बनाने का और सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, उसको संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया है। तो लोगों को पीने का पानी नहीं था, आज करोड़ों घरों में जल जीवन मिशन है। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं में अपने गहने बिक जाते थे, आज करोड़ों लोगों के पास 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है, लोगों के घर पर बिजली कनेक्शन है। यानी बेस लाइन पर तो काम हुआ है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ग्रोथ लिया है, तभी तो रेवेन्यू सेक्टर में हमारी बढ़त आई है। और मैं समझता हूं कि जो मानक आज देश में सुधारे हैं, स्वच्छता से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग को ही देखेंगे हम, तो हमने कितना बड़ा इजाफा कर लिया। 142 से हम 60 के आसपास आकर ठहर गए हैं ना। इतना बड़ा चेंज 10 सालों में, और वही झलक आपको बजट में फिर दिखने वाली। लेकिन अगर बात करें जो सुनहरी तस्वीर नजर आ रही है हमारी आर्थिक रूप से, उसका ज्यादातर श्रेय जो है सर्विस सेक्टर को दिया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र में वो गति देखने को नहीं मिली है। वो गति देखने को मिले या निर्मित हो, उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए? देखिए, विनिर्माण सेक्टर में अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो 0 से 50 उसका बेसलाइन है। तो 0 से 50 तक करने वाला जो अंक है उसको तो हम डाउन मान सकते हैं, लेकिन कंट्री तो अभी 50 से 60 पर खड़ी है साहब। तो इसको विनिर्माण सेक्टर को आप कहाँ कम करके आंक सकते हैं? यानी हमने ग्रोथ तो लिया है। और मैं एक बात बताऊं, विनिर्माण सेक्टर के अलावा अगर आप सारी चीजों के बेसलाइन पर देखें, यानी रेवेन्यू जनरेट होता है और उसके बाद एक्सपेंसेस सेक्टर को देखें तो डिफेंस में हम 2 लाख करोड़ खर्च करते थे, पिछली बार 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट था। हमारे पास सारे संसाधन है। अभी सर बता ही रहे थे 11 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से उठकर 11 लाख करोड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कंट्री खर्च करती है, ये तो अमेजिंग है, अद्भुत है साहब। तो मैं तो आशावादी हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा आंकड़ों में न उलझते हुए भी अगर 140 करोड़ लोगों के पास काम खड़ा हो जाए, 80 करोड़ लोग राशन निःशुल्क पा रहे हैं, और आप देखिए कि हर सेक्टर को छूने का प्रयास किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, स्टूडेंट के विषय में बात करो, फीमेल सेक्टर में बात करो। तो वो जो बजट है उसकी आशाएं अभी सभी सेक्टर को लगी है। और मैं इसमें आशान्वित हूं कि आज निर्मला सीतारमण जी का ये जो 8वां बजट है ये कमाल का रहने वाला है। बिल्कुल। एक और मेहमान प्रोफेसर अनुपम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, स्वागत है, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम चर्चा लगातार जारी है, और जैसा दोनों खास मेहमान जिक्र भी कर रहे हैं कि सरकार का फोकस विकसित भारत के सपने को पूरा तो करना ही है, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर साथ में चलना है। कुछ चैलेंजेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हुई है, उस पर भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनसे पार पाना है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है हमारे आगे, और उसे हमें कहीं ना कहीं पूरा करना है। आपकी नजर में बजट के जरिए किन बातों पर फोकस रह सकता है, क्या कुछ आ सकता है सामने आज? जी अनुपम जी। जी, मैं एमके अग्रवाल जी। जी जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार के सेक्टोरल पैटर्न पर अब चेंजेस हो रहे हैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? प्रोफेसर अग्रवाल, हम आपके जरिए समझना चाह रहे थे, आपका अनुमान, आपकी आशाएं, उम्मीदें क्या कह रही हैं? क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण ने बहुत कुछ बताया, मेहमान भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उस पर लगातार सरकार का जोर रहा है। विकसित भारत, हमें 2047 तक इस सपने को पूरा करना है। ऐसे में जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको बनाए रखना होगा, उसमें लगातार सुधार करना होगा। तमाम चैलेंजेस के बीच ये करना एक चुनौती भी है सरकार के सामने। आपकी नजर में कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें फोकस रह सकता है? बजट के जरिए क्या बड़ी बातें हैं जो आज पूरी हो सकती है? देखिए, मुझे जो लगता है कि इस सरकार की जो स्ट्रेटजी रही है 2014 से लगातार आप देखें
तो हर साल किसी न किसी नए सेक्टर को सृजित करना। जैसे कल तक आप टूरिज्म को सोचते थे कि भारत में बहुत बड़ा ये योगदान नहीं दे सकता, और उसी क्रम में आप देखते हैं तो आज भारत में टूरिज्म एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है। इसी प्रकार से देखते हैं तो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारत की कोई भूमिका नहीं हुआ करती थी। आज अगर आप देखते हैं तो डिफेंस इक्विपमेंट्स में हम बहुत तेजी से इमर्ज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एक्सपोर्ट में भी हम बहुत तेजी से इमर्ज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर्टिकुलरली अगर आप मोबाइल में देखते हैं, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं लैपटॉप या इस तरह की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है। यानी कि हम लगातार कर रहे हैं, एक नए ग्रोथ इंजन को सृजित कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर को अगर आप देखते हैं, कल तक हम मानते थे केवल हम अपने स्टूडेंट्स को विदेशों में भेजते हैं। आज अगर भारत में देखते हैं बहुत बड़ी संख्या आना प्रारंभ हो गई। ये सारे लक्षण किस बात के हैं कि हम नए सेक्टर को सृजित कर रहे हैं। जो ग्रोथ मोमेंटम भारत में आया है, ठीक है कि हमने जो है सृजित किया है अपने यहां नए प्रकार से डिमांड को और बूस्ट किया है, और उसके लिए इस बजट में और भी प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में 8वां वेतन आयोग भी गठित किया गया है। लेकिन इसी क्रम में आप देखिए लगातार नवाचार के माध्यम से या स्टार्टअप के माध्यम से हम लगातार नए ग्रोथ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी भी सेक्टर को उठा करके देखिए, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारा एग्रीकल्चर जो इस बार बढ़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हैं, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग उतना क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यह भी सोचना होगा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत इग्नोर किया, खासतौर पर 91 के बाद से। अब जाकर के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा मेक इन इंडिया पर हमें फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बाउंस बैक कर रहे हैं। इसमें समय लगता है, फिर भी हम मुझे लगता है जिस प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ रही है, अच्छी दिशा में बढ़ रही है। अब बात आती है कि इस ग्रोथ का रियल एक और पिलर है जिसको प्राय हम लोग ग्रोथ को डिस्कस करने में इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। अगर इस सरकार की फिलॉसफी अगर आप देखेंगे तो क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, बिग पुश स्ट्रेटजी, नवाचार आप देखते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हुए आप देखेंगे। और तब देखेंगे कि अगर भारत में देखते हैं तो जो सेक्टर्स या जो इकोनॉमीज पहले बैकवर्ड हुआ करती थी, मैं कितने राज्य सरकारों को इसमें गिनाऊं, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे आता है। पूर्वोत्तर के राज्य को कभी हम गिनते नहीं थे, आज पूर्वोत्तर के राज्य विकास से लबालब हो रहे हैं। वो भारत के विकास में जितना कर सकते हैं छोटे होने के नाते सहयोग कर रहे हैं। कश्मीर को आप देखते हैं, कल तक हम किस रूप में देखते थे, आज अगर हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, हमारा एक नया ग्रोथ इंजन बन रहा है स्टेट के रूप में। तो ये मैं कह सकता हूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी चाहे पर्सनल लेवल पर देखें, लोगों के स्तर पर देखें, तो राज्य के स्तर पर देखें, तो सेक्टोरल पैटर्न पर अगर देखते हैं तो एमएसएमई को हमने इग्नोर कर दिया था, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया था, जिस पर हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन निर्भर करता है और सरकार से अपेक्षा भी कम रखता है। वो सेक्टर आज अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत की। बिल्कुल प्रोफेसर अग्रवाल, और डिटेल में हम आपकी बात को समझेंगे। मैं चाहूंगी जो दोनों मेहमान हैं, आपने एक बड़ा पॉइंट उठाया जिस पर मैं आगे चर्चा भी जारी रखना चाहती थी। आप दोनों अलग अलग राज्यों से आते हैं। सुधीर जी, अगर आपसे पहले मैं समझूं, जो बात अभी प्रोफेसर अग्रवाल ने भी कही कि राज्यों को अपनी भूमिका में सुधार करना होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ सबको साथ में लेकर तो चलना है, सभी राज्यों को अपनी भूमिका भी निभानी है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बारे में बात कही गई। जापान, दक्षिण कोरिया का जिक्र किया गया, कुछ राज्यों का जिक्र किया गया, किस तरह से उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। राज्यों की भूमिका को लेकर आप कितना अहम रोल समझते हैं जब आप विकसित भारत के टारगेट की बात करते हैं? अभी उड़ीसा में 2 दिन तक उत्कर्ष उड़ीसा करके एक सम्मेलन हुआ था, जहां पे प्रधानमंत्री जी गए थे, और उन्होंने कहा विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित उड़ीसा होगा, जब विकसित असम होगा, विकसित तमिलनाडु होगा, विकसित अरुणाचल होगा। और जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने भी बताया कि 60 साल 70 साल तक 50-60 साल तक पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत पे ध्यान नहीं थी सरकार की, केंद्र सरकार की। और प्रधानमंत्री जी आने के बाद पूर्वोदय, उनकी जो विजन है पूर्वोदय विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया। तो ये अभी बहुत ही ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री जी का पूर्व भारत पे और पूर्वोत्तर भारत पे। तो राज्यों की जब विकास होगी, अभी जो 12 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहे हैं तो विभिन्न राज्यों में बन रहे हैं, तो इसमें से जो जॉब क्रिएट होगी, इसी से ही देश की विकास होगी। और जो 2047 तक हम लोग विकसित भारत का बात कर रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे थे, 50-60 साल तक क्यों मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर किया गया? आज ग्लोबली इंडिया का शेयर है 2.8% मैन्युफैक्चरिंग में,
2.8%, चाइना का है 28.8%, लगभग 10 गुना हमसे ज्यादा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो प्रधानमंत्री जी आने के बाद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इतने सारे उन्होंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए, इसका फर्क अभी हमको दिखने को मिल रहा है। आज देखिए R&D में, मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? मैन्युफैक्चरिंग में आप सफलता तभी मिलेगी जब आपका R&D स्ट्रांग हो। आज 0.7% हमारे GDP का R&D में खर्च होता है, 0.7%। चाइना खर्च करता है 2.2, यूएसए खर्च करता है 3.2, इजराइल 4.5, साउथ कोरिया 4.2। तो जब हम लोग R&D में, रिसर्च में खर्च नहीं करते थे इतने सालों तक, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग का नेग्लेक्ट हुआ था। लेकिन अभी ये सब बदल रहा है। अभी नया भारत जो हम लोग देख रहे हैं, अभी डिफेंस का बात भी किया प्रोफेसर अग्रवाल ने। पहले हम लोग 70% हमारा जो रक्षा का सामान था हम लोग इम्पोर्ट करते थे, आज वो गिर के 25% हो गया। अभी इस साल टारगेट है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये सब चीज दिल्ली में तो नहीं हो सकता, ये सब राज्यों में होगा। तो राज्यों में अब जैसे यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर बना है, उड़ीसा में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी बन रहा है। तो ये सब राज्यों का जब इसमें फोकस अभी जा रहा है, तो जाहिर है कि आगे का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारा जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2-3 साल के बाद, वो जरूर पूरा होगा। सुधीर जी, ये तकनीकी विकास भी बेहद आवश्यक है और इस पर लगातार जोर दिया जाता रहा है और एक अच्छी खबर भी है और एक थोड़ा सा चैलेंज भी है। जिस तरीके से चाइना के एक स्टार्टअप ने डीप सीक जो है वो इजाद किया है और वो बहुत ही कम लागत में वो तैयार किया गया है। और अश्विनी वैष्णव जी का कल का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि 1 साल के भीतर भारत भी ऐसा करके दिखा देगा। इसके लिए R&D की कितनी आवश्यकता है, निवेश की कितनी आवश्यकता है और स्टार्टअप पर जो ध्यान दिया गया है उसको कैसे और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है, अश्विन वैष्णव जी ने तो उसको कल स्पष्ट किया ही है जी। और देश लगातार जिस तैयारी पर है, तो मैं समझता हूं कि ये जो चुनौतियां वैश्विक स्तर से आई है, हम एक ही साल में चाइना को पीछे भी करेंगे, लागत भी कम करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सेक्टर में जितनी तेजी से मोदी जी ने ध्यान फोकस किया है, तो विश्व भी अचंभित रहने वाला है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली एक ऐसी कंट्री बनेंगे जो हमारे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने भी भारत को और ग्रोथ इंजन शब्द से उल्लेखित किया है ना, इस सेक्टर में डेवलपमेंट को हम साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो फोकस है एरिया, वो हर कास्ट पर है, हर सेक्टर पर है। आपने अभी स्टेट का बात किया था, तो मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहले से ही फोकस हो चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इतने नीचे लेवल पर, उसका भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। पर्टिकुलर हम जनजातीय सेक्टर में बात करें तो एजुकेशन का फोकस में 470 से अधिक एकलव्य विद्यालय अगर देश में डेवलप हुए हैं और 1.25 लाख ट्राइब्स बच्चे अगर उनमें पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30 मेडिकल कॉलेज अकेले और ट्राइब्स एरिया के लिए डेवलप हुए हैं। उत्कर्ष गांव ट्राइब्स के, जिसमें 80,000 करोड़ का बजट है। यानी फोकस हर जाति में है, हर सेक्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में है और हर एक फील्ड में है। ये आशान्वित भारत को एक उजले पक्ष की तरफ ले जा रहा है। जी सुजीत जी, कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है चीन में, वो हमारे लिए एक आशा की किरण की तरफ ही है, क्योंकि हम लोग भी विशेष रूप से प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और स्टार्टअप्स की संख्या लाखों में पहुंच गई है पिछले कुछ वर्षों में। तो और कम लागत में स्टार्टअप ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं, तो भारत में भी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं या बन रही हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं तो स्टार्टअप की दुनिया से ही आता हूँ, मैं तो टेक्नोक्रेट भी हूँ। अभी आपने 1.5 लाख स्टार्टअप हमारे अभी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, आंकड़े बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन वो 1.5 लाख में से बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो दुनिया को अभी मार्गदर्शन दे रहा है। आपने डीप सीक का बात किया, देखिए $6 मिलियन में मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि चाइना से कोई भी आंकड़ा आता है वो सही नहीं रहता है। वो $6 मिलियन में शायद नहीं हुआ होगा। चाइना डीप सीक को एक प्रोपेगेंडा टूल के हिसाब से अभी इस्तेमाल करने लगा है। कल ही मैंने उसमें एक सवाल किया था कि अरुणाचल प्रदेश
इस द राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, तो उसमें आंसर आया, पहले 3 दिन पहले मैंने किया था तो आंसर आया कि दिस क्वेश्चन आज सम अदर क्वेश्चन, और कल आया कि अरुणाचल प्रदेश इज से पार्ट ऑफ चाइना। तो ये डीपसीक है, ये चाइनीज प्रोपेगेंडा का टूल है। लेकिन कल अश्विनी जी ने जो कहा कि 1 साल के अंदर हमारी खुद की एआई मॉडल्स बन जाएंगी, ये बहुत ही हम लोग के लिए आशा का किरण लेके आ रहा है। और एआई मिशन में 10,000 करोड़, क्वांटम मिशन में, नेशनल क्वांटम मिशन का पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया था। तो मैं बहुत ही आशावादी हूं। और स्टार्टअप्स पे जो फोकस है, अभी स्टार्टअप्स पे जो फोकस है, और कल आपको ध्यान होगा, कल 18,300 जीपीयूज का कल अश्विनी जी ने कल इसका कल अनाउंसमेंट किया है। उससे क्या होगा, क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए पॉसिबल नहीं होता कि खुद जाके जीपीयू में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करे और रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल करे। तो ये एक कॉमन पूल बन गया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ये कॉमन पूल बन गया, जिससे हमारे स्टार्टअप्स को बहुत ही अभी आगे सहायता मिलेगी। और मैं बहुत ही आशावादी हूं कि आगे चल के हम लोग डीप सीक से भी आगे और उससे भी पावरफुल हम लोग एआई टूल्स बनाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीदें टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर बड़ी है। प्रोफेसर अग्रवाल, एक मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, निवेश को लेकर आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि निवेश का जो स्तर है वो मौजूदा 31%, जो कि जीडीपी के अनुपात में 31% है, उसे बढ़ाकर 35% करना है हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर आपको किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं, या क्या आपको लग रहा है कि कुछ पॉलिसी लेवल में चेंजेस की भी जरूरत है? बजट में क्या दिखेगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है इस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच भी है। मल्टी सेक्टोरल के साथ साथ ये डोमेस्टिक और ग्लोबल अप्रोच लेकर के चलना होगा, क्योंकि एक निर्धारित लेवल के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तेजी से बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें कई जो है उपयुक्त वातावरण तैयार करना पड़ता है, जो एक बजट में संभव नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमने क्या किया है, बैंकों में जो हमारी इनएफिशिएंसी थी उसको बहुत तेजी से घटा दिया एनपीए की फॉर्म में। दूसरा अगर देखते हैं तो मार्केट में कैपिटलाइजेशन बहुत तेजी से इस वर्ष बढ़ा है, आगे इसी प्रक्रिया को और बढ़ाने की तैयारी है। आप चाहे आईपीओ के माध्यम से देखें, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से देखें, तो मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। तीसरा आप देखते हैं हम डिमांड जनरेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है आज भारत बहुत तेजी से आगे क्यों बढ़ पा रहा है। निवेश के साथ साथ भारत ही एक ऐसा बड़ा राष्ट्र है जो अपने यहां डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट कर पा रहा है। चाइना इसमें फेल हो गया है, यही कारण है कि उसकी इकोनॉमी 4% के ऊपर नहीं जा पा रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी। हमारे यहां अभी भी बहुत से अनटैप्ड पोटेंशियलिटीज हैं। फिर आप देखेंगे कि ग्लोबल माहौल क्या है। ग्लोबल माहौल में इस समय यूरोप, अमेरिका, चाइना, इन बड़ी कंट्रीज में बहुत अच्छे वातावरण नहीं है आर्थिक रूप से, और चाइना के प्रतिकूल एक विश्व का आर्थिक वातावरण बन रहा है। ये भारत के लिए एक उपयुक्त वातावरण, क्योंकि हमारा जो घरेलू वातावरण है आर्थिक रूप से, अन्य रूप से भी देखते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव होता। मैं इसका एक बड़ा अच्छा चित्रण देता हूं अक्रॉस द पार्टी लाइंस। अभी एक बैठक हुई davos में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, और वहां पर आप देखेंगे तो हमारे 8 राज्य गए थे। उन 8 राज्य में केरल था, तमिलनाडु था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक था। कर्नाटक साथ में नहीं आया, बाकी सभी राज्य मिलजुल करके davos में काम कर रहे थे। केवल 2 पवेलियन में 6 राज्य थे, जिसमें रूलिंग पार्टी के वाले राज्य भी थे और जो अपोजिशन वाले थे, और सब अपने अपने राज्यों के लिए निवेश आकर्षित कर रहे थे। यानी कि राज्यों को भी प्रेरित किया गया और ग्लोबल लेवल पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में आज के दिन जो राज्य हैं, पॉलिटिकली कुछ भी हो लेकिन इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। इसमें सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं। सुजीत जी, सबने अपने अपने पॉजिटिव से बताए हैं। दूसरा बात है कि डोमेस्टिक पे हम कैसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें देखिए बड़ा फाइन ट्यून बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पर एक तो हमें डिमांड को बढ़ाने के लिए खर्च भी बढ़ाना है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा रियल जो बूस्ट आ रहा है वो आ रहा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से।
और इस बार ये बढ़ता हुआ नजर आया, लगभग 62% के आसपास हुआ है हमारा, जो अब तक का पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक रहा है और लगातार पिछले 3-4 वर्षों से ये बढ़ रहा है। तो ये हमारे निवेश को आकर्षित कर रहा है। और अगर आप राज्यों के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य जो 40 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमओयू करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अब निवेश भारत में आकर्षित हो रहा है। फिर हम नई टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी हम बड़े निवेश के लिए बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्पादन लागत को हम बहुत तेजी से कम कर रहे हैं और पूरा प्रयास आप देखेंगे पूरे इकोसिस्टम में। पीएलआई की बात आई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात आई, वो भी क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, और जो कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इफिशियंसी को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल जो फ्लो होगा इन्वेस्टमेंट का, वो किधर होगा? वो वहां पर होगा जहां पर इफिशियंसी और डिमांड होगा। तो ये कई पैरामीटर जोड़ करके हम देखते हैं तो बहुत तेजी के साथ लेकिन ग्रेजुअल फॉर्म में हम इस ओर अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, यहाँ पर सुजीत जी बात की है कि खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो भी उसका लाभ सीधे तौर पर आर्थिक रूप से देश को होता है। हमने ये देखा कि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था, लोगों की आय में वृद्धि हुई थी और उसका जो है सकारात्मक असर जो है इकोनॉमी पर हुआ था। 8th पे कमीशन को जो है वो पास कर दिया गया है। क्या उसका रिफ्लेक्शन हमारी आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये 6%, 6.4% जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लोगों के हाथ, उन लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है। आज 34 लाख करोड़ जनधन अकाउंट के माध्यम से लोगों के पास पहुंच चुका है, 34 लाख करोड़। और जब मैंने 5 करोड़ आदिवासी भाई बहनों के पास आज 80,000 करोड़ रुपया अभी पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया था। तो ये सब जब लोगों के पास पहुंच रहा है, ठीक है। आप टैक्स का बात कर रहे हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि टैक्स रेट कम घटाना चाहिए और मिडिल क्लास के लिए कुछ ज्यादा पैसा हाथ में आना चाहिए। ये तो ठीक है, मैंने कहा 3 करोड़ लोग ही सिर्फ टैक्स रिटर्न 7.5 करोड़ रुपया टैक्स करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें से 3 करोड़ टैक्स भरते हैं। तो लोगों के पास जो वेलफेयर स्कीम्स पहुंच रहे हैं, अब 3 लाख ड्रोन दीदी, लखपति दीदी का बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति का बात, आज 1 लाख ड्रोन दीदी। तो ये जब लखपति दीदी 3 लाख बनेंगी तो ये 3 करोड़ लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी, तो ये खर्च तो देश में ही होगा और ये देश की अर्थव्यवस्था को ही बढ़ाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें जो कंजम्पशन, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जैसे 11 लाख करोड़ पिछले बार इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्लान किया गया था, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे। 11 लाख करोड़ जब इतने रोड बनेंगे, इतने हाईवेज बनेंगे, इतने ब्रिजेस बनेंगे, उसमें इतने सारी नौकरियां पैदा होंगी, इतने सारे इकोनॉमिक विलेज इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगा। तो ये सब चीज फिर आगे चल के हमारी जो अर्थव्यवस्था इसको स्ट्रांग करेगी। जी हाँ। और सुधीर जी, जल्दी से अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एग्रीकल्चर की अगर बात करें, तो हम जानते हैं कि लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस है, बड़े रिफॉर्म्स लेकर सरकार लगातार आ रही है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर किस तरह की उम्मीद है? और महिलाओं का जिक्र जिस तरह से अभी किया है सुजीत जी ने, 3 लाख करोड़ रुपए पिछली बार महिलाओं के कहीं ना कहीं खाते में गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली योजनाओं के जरिए। तो ऐसे में महिलाओं को लेकर भी क्या उम्मीद? नहीं, देखिए, भारत का रीढ़ है एग्रीकल्चर। आज भी 62% पॉपुलेशन उस पर खड़ा है, तो उसको तो फोकस किया ही है 10 सालों में। एमएसपी की वृद्धि इंगित करती है, फर्टिलाइजर सेक्टर में सब्सिडी इस बात को इंगित करती है, पीएम किसान योजना के तहत एक साथ एक मुश्त किसानों को, करोड़ों किसानों को पेमेंट, ये भी इंगित करती है। ड्रोन दीदी से लेकर बैंक सखी से लेकर पशु सखी से लेकर कृषि सखी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुपों का बड़ा विशाल नेटवर्क खड़ा करना, ये भी इस बात को इंगित करता है। मेन फोकस अभी सहकारिता पर आ गया, कोऑपरेटिव सेक्टर में, और ये वर्ष तो अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ईयर ही है। इसमें माननीय अमित शाह जी ने 8 लाख ऐसी सहकारी सोसाइटियों को, पैक्स को और मूल धारा में लाकर खड़ा कर दिया। तो अभी जो भारत की प्रगति का बहुत बड़ा आधार
इन सालों में बनने वाला, वो सहकारी सेक्टर से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं जो अपनी आमदनी को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर से लेकर पेट्रोल पंप तक, वेयर हाउसिंग से लेकर सारी सर्विसेज अब कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। तो भारतीय इकोनॉमी का आधार जो किसान रहा है, किसानों को मजबूत करने के लिए नीचे बेसलाइन पर विश्वकर्मा योजनाएं, आज अभी मुद्रा बैंकिंग में 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर जो गांव-गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके डेवलपमेंट्स के सारे काम खड़े किए हैं। डिजिटलीकरण हुआ है तो पानीपता सा बेचने वाला भी अपनी बैंकिंग फैसिलिटी को पा रहा है। इतना इजी हो गया है। तो मैं समझता हूं महिला सेक्टर में तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है। नारी वंदन अधिनियम इस बात को प्रूव कर रहा है कि हम बहुत तेजी से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। तो जब महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व आएगा तो आर्थिक उन्नति के सेक्टर में भी उनको फोकस एरिया में लाकर खड़ा किया है। आज आप देखिए, बहन अब हवाई जहाज उड़ाती है, बहन अब मिलिट्री स्कूलों में एडमिशन ले रही है, लड़कियां अब आपकी ऐसी सारी सर्विसेज में, यानी कॉरपोरेट जगत में तो डायरेक्टर ही नहीं बनती थी, इन 10 सालों में तो अब कॉरपोरेट जगत को भी लीड कर रही है वो। तो नीचे आप ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक महिलाओं की एक बड़ी भूमिका कंट्री ने अपने आप को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेटी तो अब रक्षा मंत्रालय के उसमें होकर भारत में सैनिक विमान उड़ाती है और राफेल उड़ाती है। तो ये कहाँ पहुंच गया देश इन 10 सालों में। तो मैं समझता हूं कि उस सेक्टर को भी अछूता नहीं रखा और बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। सुजीत जी, बड़ी बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो कारगर भी सिद्ध हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र से भी रिटर्न मिल रहा है। कोरोना काल में जब वैश्विक चुनौतियां सामने खड़ी थी तब भी हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, या फिर कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बचाई वो कृषि क्षेत्र ने। और दूसरा, जो डिमांड की बात की जा रही है वो शहरी क्षेत्रों में के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बड़ी है, उसका भी लाभ सीधे तौर पर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश में फ्रीबी कल्चर नहीं होनी चाहिए, और मैं ये फ्रीबी और वेलफेयर में एक जो डिफरेंस है उसका जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे सुधीर भाई ने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि स्कीम, 80 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जब प्रधानमंत्री जी स्वनिधि स्कीम के तहत उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था में वो शामिल होता है। जब किसानों को एमएसपी मिलती है, किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत उनको सपोर्ट मिलती है, जब इरिगेशन पे ध्यान जाता है, जब पीने का पानी पे ध्यान जाता है, तो ये सब चीज घूम फिर के अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्था को ये बनाता है। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, कंजम्पशन लेड ग्रोथ ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, आज जो जनधन, आधार, मोबाइल, कोविड के समय भी 80 करोड़ जनता को पैसा मिल जाता था अपने बैंक खाते में, बिना बैंक गए उनके पास पैसा पहुंच जाता था, जबकि सारा दुनिया ठप थी कोविड के समय। ये छोटी बात नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको सोच के देखिए। तो ये सब चीज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, मैं एक रूरल जिले से आता हूं, कालाहांडी, उड़ीसा से, तो मैं देखा हूं कहाँ कैसे वहां पे परेशानी होती है और आज डिफरेंस में देख रहा हूं। तो यही सब चीज जो 10 साल में बदलाव आया है, ये मैं बहुत ही उम्मीदवार हूं। अगले अपना 15-20 साल देश के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग जा ही रहे हैं, और रियल ग्रोथ है। ये ऐसे नहीं कि मतलब एक पहले जैसे 90 के दशक में होता था, ग्रोथ होता था, लेकिन वो एक टेम्परेरी ग्रोथ था। ये जो ग्रोथ है ये परमानेंट ग्रोथ है, ये परमानेंट ग्रोथ है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी डेवलप्ड नेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बेहतर बनने जा रही है। तो यही सब चीज देश के लिए बहुत अभी आशा का किरण लेके आ रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर अग्रवाल, एक कमेंट हम थोड़ा सा आपका समझना चाहेंगे, और ये तस्वीरें भी साथ में क्योंकि चल रही हैं, इन तस्वीरों के बारे में बता दें। ये संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने टैब के साथ, जो एक लाल रंग के बैग में रखा हुआ है, और हर बार इसी में नजरें होती हैं कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री किस तरह के ऐलान करेंगी, वो सब कुछ इस टैब में बंद है। कुछ ही पलों का इंतजार और है। 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और लगातार इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर भी देखेंगे। प्रोफेसर अग्रवाल, अब बात मैं चाहूंगी एक कमेंट आप उस पर भी करें जिस पर
मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा नजरें होती हैं। बात होगी टैक्स की, जिसका सुजीत जी ने शुरू में जिक्र भी किया था। थोड़ा सा हम आपके जरिए समझना चाहेंगे, जब हमने वित्त मंत्री का जुलाई 2024 का बजट भाषण सुना था, उसमें सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आंतरिक समिति बनाई थी ताकि जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिले, आसानी हो। अगर हम डायरेक्ट कोई ऐलान टैक्स में राहत का नहीं सुनते हैं तो किन और बड़ी बातों पर नजर रह सकती है, ताकि अगर डायरेक्ट कोई राहत नहीं मिल रही है तो इनडायरेक्ट राहत पर नजर हो आम आदमी की? देखिए, जहां तक बात है, पहले मैं इनडायरेक्ट की बात करता हूं। इनडायरेक्ट राहत को अगर हम लोग एस्टिमेट करें तो ये बहुत बड़ी राहत है। सबसे पहले सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर कोई 2 GB 4 GB डेटा लेकर के, स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ से लेकर के स्ट्रीट वेंडर से लेकर के प्रोफेशनल तक यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल। और इस डेटा का प्राइस क्या है आप इमेजिन करिए, दुनिया का सबसे सस्ता और फास्टेस्ट डेटा है। ये मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में देखें तो एविएशन के रूप में देखें या बैंकिंग रिफॉर्म के रूप में देखें, किसी भी टाइप के देखें, हम बिल पेमेंट देखते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का जो हैरेसमेंट हुआ करता था ऑफिसेज में, उससे बचत की बात है। हर जगह टाइमलाइन निर्धारित हो गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप की चीजें ये सर्वाधिक अगर किसी को प्रभावित करती है तो मिडिल क्लास के जीवन को आसान करती हुई नजर आ रही। आज जब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े हैं तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही हम न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं इजीली। अगर कपल्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चा है, वो भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो जिस प्रकार का ईज ऑफ लाइफ भी आया है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो ईज ऑफ लाइफ भी आया है, हाउस होल्ड लाइफ भी आया है। वो एक बहुत बड़ा, उसको हमने कभी बजट में फैक्टर इन नहीं किया है, जबकि हम लोग अपने स्तर पर शोध पर इसको देख रहे हैं, तो इसको भी फैक्टर इन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये आती है कि प्रोसीजरल जितना था फेसलेस, अगर आप देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, अक्रॉस कंट्री फेसलेस कर दिया है। ये मोदी जी का सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि टैक्सेशन रिफॉर्म, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट जो हम बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार की रणनीति और वातावरण बन रहा है, खासतौर पर डिमांड प्रमोशन के लिए, और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं, जिसको मैं कहता हूं परंपरागत आकांक्षा क्या है, इनकम टैक्स में डायरेक्ट रिलीफ मिलना, तो मुझे लगता है कि इस बजट में लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ऐसा मेरा बहुत सशक्त विश्वास है। और यही नहीं, स्लैब में भी चेंजेस आएगा। और मैं बता दूं कि सरकार ने जो टैक्स वाइडनिंग किया है, आज लगभग 7 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल हो रहे हैं। 3 करोड़ न होकर के लगभग 6-7 करोड़ ये हो रहा है, और बहुत तेजी से वाइड हुआ है। जीएसटी में भी आप देखेंगे कि जो लीकेज, हालांकि बजट से जीएसटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन बजट पर प्रभाव डालता है, ये हमको देखना पड़ेगा। और ये कि बहुत बड़ा बैलेंसी का काम कर रहा है। तो इनकम टैक्स जहां तक बात आती है, मुझे लगता है इसमें चाहे हाउसिंग लोन में जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसकी लिमिट भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार से और भी जो बेनिफिट्स हैं, खासतौर पर स्लैब्स के रूप में या टैक्स रेट्स के रूप में, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इसमें मिडिल क्लास को जरूर खुश होने का अवसर प्राप्त होगा। सुजीत जी, अगर बात करें रोजगार की, कहते हैं आधारभूत ढांचा उसका जितना विस्तार होता है उतना ही रोजगार भी बढ़ता है। 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान था, 10 साल पहले की बात करें वो 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और लगातार एक्सपेंड हो रहा है। सबसे ऊंचा ब्रिज हम बना रहे हैं, सबसे आधुनिक ट्रेन हम निर्मित कर रहे हैं, रोड्स हाईवेज लगातार बढ़ रहे हैं, टनल्स बढ़ रही हैं। तो क्या माना जाए, इसमें बजट में और ज्यादा प्रावधान रखा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उसका सीधा सीधा असर रोजगार के क्षेत्र पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये बजट रोड मैप प्रेजेंट कर रही है 2047 के लिए। प्रधानमंत्री जो बार बार जब कहते हैं विकसित भारत और ये अमृतकाल की बात होती है, तो ये हर बजट
हर जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ये एक माइलस्टोन होती है वहाँ 2047 के लिए। और हाँ बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि रोजगार अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 करोड़ लोग हर साल अपने जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को एमएसएमई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई ही जॉब क्रिएट करती है। देखिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई पे हम लोग जब तक नहीं ध्यान देंगे तब तक जॉब्स नहीं होगा क्रिएट। और जो अपने जो स्टूडेंट्स और ये जो यंग वर्कफोर्स है, आज देखिए 25 साल से आधी हमारी आबादी है, 700 करोड़। अभी 140 करोड़ की आबादी में से आधा अगर 25 साल से कम है, वो 700 करोड़ हो गया। तो ये कल चल के यही सब जॉब मार्केट में आएंगे, तो इनके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एमएसएमई पे थोड़ा ज़्यादा मैं उम्मीद रखूंगा कि वित्त मंत्री जी एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने 2-3 चीज़ जो कहा कि जीएसटी का एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाया जाए, लोकल प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई को प्राधान्य दिया जाए, कॉम्प्लायंसेस कम किया जाए। तो एमएसएमई और मुद्रा लोन देखिए 10 लाख से 20 लाख हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप पूछिए किसी भी स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को एमएसएमई मुद्रा लोन लेना कितना मुश्किल है, बिना कोलेटरल का देते नहीं है। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान और सरकार को देनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही मतलब आशावादी हूँ कि ये आगे 15-20 साल हमारी स्वर्णिम दिन है, और प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में जो देश के लिए जो फाउंडेशन जो ले किया है, ये 50 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन चलिए 2014 से शुरू हुआ है और ये हमको विकसित भारत की तरफ लेके जा रहा है। जी, यहाँ पर लोन की बात करें अगर सुधीर जी, एनपीए एक बहुत बड़ी चुनौती थी बैंकिंग सेक्टर के सामने, और अब ऑल टाइम लो पर आ गया है, 2.6% रह गया है। अब क्या बैंकों के सामने एक रास्ता है कि अब लोन जो खींच कर हाथ दिया जा रहा था, अब थोड़ा सा उदार होकर लोन दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फायदा होगा और व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे? देखिए, मैं जहां तक महसूस करता हूं 11% से 2.6% पर आया है। हम 11% एनपीए पर बैठे थे, वहां से आज 2.6 पर हैं। तो ये तो मोदी जी का जो विजन था, उसके बिना ये संभव नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर जो कि एक तरह से कोलैप्स हो रहा था, उसको मेंटेन किया। अब आप बैंकिंग सेक्टर के हर पहलू को देखें तो जो अपनी पूरी चर्चाओं में सार आया है कि नीचे जनधन अकाउंट से लेकर ऊपर हायर लेवल तक हर सेक्टर में बैंक अब पहुंच चुका है। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर के पास हो, चाहे वो मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से करोड़ों अकाउंट्स हों, तो चाहे वो, मैं अपने क्षेत्रों में जब फोकस करके देखता हूं तो इंडस्ट्री के लिए लोन अब इजी अवेलेबल है, यानी बैंक अब घर आ जाती है। तो लोन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड हुई और सब्सिडी सेक्टर को जो स्ट्रांग किया है, एमएसएमई सेक्टर में तो गजब का सब्सिडी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सब्सिडी को फोकस किया है, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, और वो बिना बैंक के, बिना नाबार्ड के संभव नहीं था। तो डोर अप्रोच हुआ है। बड़ी यूनिटें भी अब बहुत तेजी से और फाइनेंस को ले पा रही है, पर इतना इजी तो नहीं करना चाहिए कि लेकर निकल जाओ। तो जो लेकर निकल जाओ वो तो मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी के हस्ताक्षर से इतना फैसिलिटी होगा। हम चाहते हैं कि जो डिपॉजिटर से उनके हितों का संरक्षण होते हुए मैक्सिमम पैसा जो आज डिपॉजिट बैंकों में रखा वो लोगों तक पहुंच रहा है, और लोगों का फोकस बैंक डिपॉजिट के साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में भी सीधा सीधा प्रोफेसर अग्रवाल से भी समझना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट है प्रोफेसर अग्रवाल, जिस बात का जिक्र भी सुधीर जी भी कर रहे हैं कि बड़ी बात जो कल सामने आई कि अब भारत में भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो आम आदमी है वो बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर समझ रहा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। और बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका जैसी, जहां लोगों में ये ट्रेंड पहले से देखा जाता था। तो ये बदलाव आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, ये किस दिशा में जा रहा है और क्या संकेत दे रहा है? देखिए, यह हमारे कैपिटल मार्केट का स्टेबिलिटी का प्रमाण है कि जो हमारे यहाँ की शेयर मार्केट कॉमनली जो हम समझते हैं, या इसी प्रकार से अन्य जो मार्केट है, हम लोग इसको स्कैम फ्री एरा में आ गए हैं। आप याद करिए पहले हुआ क्या करता था, हर तीसरे चौथे साल कोई ना कोई स्कैम हुआ करता था। 2014 के बाद से ये शब्द शेयर मार्केट से लगभग गायब हो गया है। वो बेतुका वोलेटिलिटी जो हुआ करती थी वो गायब हो गई। तो आम निवेशकों का इसमें भरोसा बढ़ा है। दूसरा क्या है कि जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और कोरोना काल में भारत ने अपना सिक्का जमाया है क्रेडिबिलिटी का, आप देखिए तो लोगों का जो विश्वास बढ़ता है उस सिस्टम पर बढ़ता है, और सिस्टम जब हमारा विश्वसनीय होता है, स्ट्रांग होता है, और उसके चेक बैलेंसेस स्ट्रांग होते हैं। इतना सब कुछ हिंडनबर्ग ने किया, लेकिन हमारा शेयर मार्केट नहीं हिला। उनका अभिप्राय कुछ भी रहा हो,
लेकिन हमारा चूंकि फंडामेंटल पर बेस है, चेक बैलेंसेस उसके स्ट्रांग हैं, तो ये लोगों में भरोसा पैदा करता है। आप याद करिए, स्कैम शब्द आपने कब सुना होगा? मुझे नहीं लगता पिछले 10-12 सालों में ये शब्द जो है किसी के कान में आया भी होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ अब जो निवेश हो रहे हैं, अब निवेश रियल निवेश हो रहे हैं। आप देखिए तो सब्सिडी को लेकर के नहीं, गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के नहीं, यानी कि रियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल को प्रमोट किया जा रहा है। यूथ्स को भी इसमें इनवाइट किया जा रहा है। ये सारी चीजें यदि आम लोगों को आकर्षित करती हैं निवेश करने के लिए, तो दूसरी ओर हमको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। और यही कारण है, मैं इसी लाइन से अपनी बात को रोकूंगा, कि हम लोगों का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारे 90% जो लोन्स हैं उसको कवर करता हुआ नजर आता है। तो लोगों को यह भी भरोसा है कि हम फिनेंसेस पर देखते हैं या किसी रूप में देखते हैं, तो भारत की आज वित्तीय आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो हमारा सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और सेफ हैंड्स में है, जिससे हम विकसित भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इसमें सभी अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर अग्रवाल, और इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रोफेसर अग्रवाल आपका, सुधीर जी आपका, सुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब सीधा प्रसारण आप कुछ ही पलों में देख पाएंगे। ठीक 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और लगातार जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और संसद टीवी पर बजट पेश होने की जो प्रक्रिया है वो भी आप पूरी देखेंगे, और उसके बाद भी जो लगातार विश्लेषण है बजट को लेकर वो भी संसद टीवी पर लगातार जारी रहेगी। जी हां, 8वां वित्त बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐतिहासिक क्षण उनके लिए भी और पूरे देश के लिए भी। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। सभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब उनका बजट भाषण आप सुन पाएंगे आपकी अपनी भाषा में। ऑनरेबल स्पीकर, समझ पाएंगे देश का बजट कैसे जुड़ेगा आपके सपनों से, क्योंकि बजट के हर फैसले का असर होता है सीधा आपकी जिंदगी पर। बजट तय करेगा देश के विकास की दिशा और प्रगति की राह। संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखिए बजट का सीधा प्रसारण 1 फरवरी सुबह 11 बजे से। अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी। What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty, central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. When the finance minister presents the union budget in the Lok Sabha, now you can listen to the speech in your own language. Honorable Speaker, understand how this budget aims to meet aspirations, empower the youth and shape India's future, because every budget decision impacts your life.
Budget will define India's growth and progress. Watch it live on Sunset TV's YouTube channel on 1st February 11 a.m. in English, Hindi and other Indian languages. What is Finance Bill? It contains the government's proposals for levying new taxes and modifying the existing tax structure, or even continuing the existing one beyond the period approved by Parliament. It is submitted to Parliament along with the budget. महात्मा गांधी एक प्रखर लेखक और संपादक भी थे। उनके विचार जन जन तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाएं, डायरी एवं पुस्तकें एक सशक्त माध्यम बनी। संसदीय पुस्तकालय में उनके लेखन को समर्पित एक संपूर्ण अनुभाग की स्थापना 9 अगस्त 1978 को की गई, जिसे नाम दिया गया गांधीयाना। इस अनुभाग में अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 5000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ महात्मा गांधी के संपूर्ण लेखन कार्यों का संग्रह अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। गांधी जी के अंत समय तक उनके साथ रहने वाली मनुबेन की पुस्तक बापू माय मदर, लुई फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस संग्रह का हिस्सा है। यह अनुभाग महात्मा गांधी के कार्यों, उनकी जिंदगी, उनके लेखन के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले सांसदों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy.
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development,
investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits,
and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores.
Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management
in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health,
and Sustainable Cities in 2023. Now a Center of Excellence in Artificial Intelligence for Education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare and cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land
and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport
and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources.
We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID
will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26.
Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg,
whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide
operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows: personal income tax reforms with special focus on middle class, rationalization of TDS and TCS for easing difficulties, encouraging voluntary compliance, reducing compliance burden, ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties,
I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country.
extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them.
the total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honourable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission,